Good morning to all of you. I'm Rajesh Kumar, science teacher of KLM International School, Pathankot. Today we'll start a new chapter, Control and Coordination, class 10th, Biology. Let's start. First of all, what is stimuli? Stimuli means any change in the surrounding against which your body respond. Okay, for example, heat. Our body respond toward heat, cold, sound. These are actually the stimuli. Not only the stimuli be actually from the outside, stimuli can be within the body also. For example, if there is any gastric problem inside your stomach, your body is also respond toward that particular stimuli. Okay, आपकी जो body है उसके against भी response करती है. Okay, इंक्रीज इन हार्ट बीट, अगर आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ओके ड्यू टू एनी एक्टिविटी or due to maybe some any disease problem or anything, then your body is also do something to minimize that response, because that particular activity can result into the very harmful effects on the body. Okay, so these are actually a stimuli. Okay, in this chapter, basically the control and coordination means how our body control the various organs or how our organs work together actually. Okay, देखो इस चैप्टर में बेसिकली चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जैसे ब्रेन है, ब्रेन इज द मेन हेड ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज. ओके, हाउ ब्रेन कंट्रोल दीज ऑल एक्टिविटीज, हाउ ब्रेन वर्क इन कोऑर्डिनेटिंग वे. ओके, कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग समथिंग. Coordination means the coordinating the work between different organs, how these organs work together or perform in order to perform a particular function. For example, if you take an example of digestive system, we know that in digestive system there are so many organs involved, like stomach involved, intestine involved, liver, pancreas, and these organs can work in a coordinating way to complete the digestion. Okay, to complete the process of digestion, and brain play a very important role. Okay, next is coordination. Okay, for a proper response to a stimuli, many organs in the body should work together. Okay, as I already discussed with you. Okay, plants, not only humans, plants also show coordination. Okay, plants leaf show coordination, plants stem show coordination. Okay, plants also respond toward the stimulus, like plants can respond toward the sunlight. Okay, आपने देखा होगा जो plants होते हैं उनकी टिप जो होती है, ornamental plant, no, I'm talking about ornamental plants especially. Okay, the tip of these plants can be bent toward the source of light. For example, यहाँ पे sun है, ये sun है, और these are the, actually this is a plant, और ये टिप जो है ना प्लांट की वो सन के सामने बेंड हो जाएगी, और जहां जहां सन मूव करेगा टिप वहां पर बेंड होती रहेगी. Why? Because of response. So it is actually response. Okay, for what? To attain maximum sunlight. Okay, ज़्यादा sunlight वो अपने surface पे गिरा सके, surface area increase करते हैं वो, और photosynthesis rate increase हो. Okay, and this is also because of some hormones. Okay, next is coordination in animals. Okay, in animals, control and coordination is done by a nervous system or endocrine system. Okay, nervous system is actually a system which contain millions of neurons. Neurons are actually the structural and functional unit of nervous system. Endocrine system is actually a hormonal system. Okay, when our body respond to by with the help of a hormone. For example, in condition of fear, in the condition of fight. Okay, when you are excited. Okay, these conditions can result into change in hormones. These conditions are basically due to the hormone. देखो सडनली आप ऐसे बैठे हो और सडनली कुछ ऐसी न्यूज़ आपको सुनने में मिलती है जो मे बी आपको हर्ट करे और मे बी आपको एक्साइट करे. मे बी यू आर सिलेक्टेड इन नीट और यू आर स्कोरिंग 99%. तो आप उस टाइम सडनली एक्टिवेट हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो. व्हाई? बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. ओके, सो वी कैन से दैट इन कोऑर्डिनेशन एनिमल्स डन विद द हेल्प ऑफ endocrine system. Endocrine system is a system which deals with the hormones, and nervous system which deals with the neurons. Okay, the nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. Okay, the nervous system जो है उसमें brain, spinal cord and nerves आती है. देखो plant do not have any nervous system, but plant do have endocrine system. Okay, hormonal system is there. Receptors are those which can receive signals. Receptors जो होते हैं वो signal receive करते हैं. For example, जैसे skin है. Okay, अब मैं skin पे अगर किसी चीज़ को touch करूँगा, for example अगर कोई pin है या किसी heat की वजह से अगर स्किन जल रही है, तो हीट इज एक्चुअली स्टिमुलाई. ओके, अब डिपेंड करता है वो हीट कितनी है. अगर तो वो हीट टॉलरेबल है तो आप टॉलरेट कर सकते हो. अगर वो नॉन टॉलरेबल है तो अपना हाथ जो है विड्रॉ करोगे. ठीक है, तो दिस इज स्टिमुलस. ओके, और इनको जो रिसीव करेगा कौन करेगा? रिसेप्टर करेगा. रिसेप्टर एक्चुअली सेंस ऑर्गन्स व्हिच रिसीव द स्टिमुलाई and pass the message to the brain and spinal cord, or spinal cord through the nerves. Okay, फोटोरिसेप्टर मीन्स लाइट आइस. और हम देखो आइस जो है वो लाइट
को रिसीव करते हैं। देखो जब अगर बहुत धूप निकली हो, अगर आप बाहर जाओ तो डेफिनेटली आपकी आईज जो है थोड़ी सी वो श्रिंक करती हैं, मीन्स पीपल जो है श्रिंक करता है बिकॉज ज़्यादा हीट जो है आईज में ना जाए, ज़्यादा लाइट जो है आईज में ना जाए। ओके, तो photoreceptor basically detect the light, phonoreceptor detects sound, olfactory receptor detects smell, basically present in nose, the cytoreceptor taste tongue में होते हैं, tangoreceptor detect touch जो skin में होते हैं, tangoreceptor बोलते हैं इनको, ठीक है। Effectors actually which actually respond against the stimulus. Okay, receptor receives stimulus, effector give response. Okay, effectors are muscles, glands, anything which can respond. Okay, for example, डाइजेशन, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइजेशन। ओके, तो जब आप खाना खाओगे तो एचसीएल रिलीज होता है लार्ज अमाउंट इन द स्टमक। ओके, द एचसीएल जो रिलीज किया किसने किया, ग्लैंड ने किया। नाउ द ग्लैंड इज एक्चुअली अ फैक्टर। क्यों ग्लैंड ने एचसीएल रिलीज किया, बिकॉज ऑफ फूड, फूड आया, ग्लैंड ने एचसीएल रिलीज किया, एचसीएल हेल्प इन डाइजेशन। ओके, दैट्स सिंपल। ओके, फैक्टर्स। Sensory nerves. Sensory nerves, actually, the nerves are basically of different types. Okay, like motor nerves, sensory nerves. So you can also call motor neuron, sensory neuron. Nerves are actually plural, or a neuron is actually a singular. Okay, sensory neurons which actually receive the signals. Okay, for example, when you touch the skin. Okay, when any other person touch your skin. Okay, now ना अब ये बॉडी जो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, अगर वो टच जो है वो आपके नोन का है, फॉर एग्जांपल जब कोई आपको टच करे, अगर वो पेरेंट का टच है या ब्रदर का है, सिस्टर या फ्रेंड का, तो आप उस टच को पहचानते हो बिकॉज ऑफ मेमोरी। ओके, बट अगर वही टच किसी और का है, अननोन पर्सन का है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम योर बॉडी रिस्पॉन्ड, अब वो रिस्पॉन्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, रिस्पॉन्ड नेगेटिव भी हो सकता है आप उसको थप्पड़ भी मार दो, हो सकता है आप उसको कुछ नहीं बोलो, डिपेंड करता है। ओके, तो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे मैंने पिंच किया, टच किया, अब यहाँ पे जो मेरी स्किन में होंगे न्यूरॉन्स, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। वो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से मैसेज को कैरी करेंगे, कहाँ तक कैरी करेंगे, ब्रेन तक, ठीक है। अब ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा, वो मैसेज किससे भेजेगा, वो मोटर न्यूरॉन से भेजेगा। ओके, मोटर नर्व, और यू कैन मोटर न्यूरॉन। ओके, नर्व प्लूरल एंड न्यूरॉन इज सिंगुलर। ओके, सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स receive the message from the stimulus and receive the message from the receptors and then send the message to the brain, and from brain respond come in the form of motor neurons. Okay, and the nerves which carry information from brain and spinal cord to effectors, okay, muscles and glands. Human nervous system. Okay, then our main topic is nervous system actually. Okay, nervous system is a system which can control all these activities takes place within the body and bring about a particular function. Okay, like digestion, like respiration, like excretion, like respiration. Okay, and this is basically due to the nervous system. Nervous system basically consists of two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Okay, central nervous system consists of brain and spinal cord. Okay, brain here and spinal cord is backbone. Okay, and the peripheral nervous system consists, the nerves arise from the brain and the nerves arise from the spinal cord. Okay, now here. Now the nerves that rise from the brains are called as cranial nerves. Cranium is actually a box, okay, because we know that brain is protected inside a structure called as brain box or cranium, okay, and cranium is protected with the help of skin, and above the skin hairs are present. Okay, so these are the various membranes which protect the brain. Okay, first hair, then skin, then cranium, then brain. Okay, between the cranium and brain, okay, please listen carefully, between the cranium and brain there is a liquid present, and that particular liquid is known as CSF, cerebrospinal fluid. Okay, cerebrospinal fluid. Okay, that particular fluid protect the brain from any injury or from any shock. Okay, CSF is a fluid present between the brain and cranium. Okay, that protect the brain from any injury. Okay, so these are the protective layers which protect the brain from various things. Okay, I hope you understand these concepts. Okay, meet you soon in the next video. Okay, in the next video we will discuss about the further parts of the peripheral nervous system and central nervous system. Till then, stay safe, stay at home. Thank you.